So good morning everyone. I, the principal of Fateh Global School, welcome you all here on the behalf of management and the entire staff, the staff from Mallan. And especially I invite Madam Reena, the principal of Mallan, and the resource person, the charm, the great personality of the day, Mr. Vipin. He is there among us, and today he will give us an insightful session. I won't say it would be professional or not a professional but a formal gathering. It is going to be a very easy, very comfortable session because I won't say much about him because you will come to know within very initial few minutes you will come to know that who he is. He is the person who is very, very down to the earth, and he has been to Punjab, Uttarakhand, Himachal, and many more other areas of India. He knows Punjabis very well because he himself is from the Punjabi family, and he has got so many national awards, and the national awards he has received from the personality like Dr. Abdul Kalam as well. So today, through his personality, we are going to meet those great personalities as well. So I won't say much about. I would hand over the stage to sir so that we can have more and more from him today. So sir, over to you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Ma'am has given me already, a kind of punch that session will be very good. So expectations are very high. So frustrations are directly proportional to expectations. So I am nothing. I'm just a teacher like you. I am one of the teachers among you here. This is your workshop. This is not my workshop. Moreover, the workshop will last so long you want. Once you sit, and don't make any excuse, I am suddenly getting dizzy and mujhe jana ma'am. So workshop is really sometimes is not a comfortable when we see in the notice board or circular. This is our workshop. Before I start session, let me brief about myself now. That is called Apne Muh Miyan Mithu. I have done 509 workshops. My first workshop was in TLF Moga 5 years ago. And after that, I never knew that that's a workshop. The person came to me. He said, Vipin sir, there is a workshop. Can you do it? Though I am an engineer, I can do workshops in electronics, transistors, NP, NP, transistors, etc. But car to langa. कहंदे नहीं सी सर वो वर्कशॉप नहीं है मैं कह इंजन ओवरहाल मैं कह ना कहंदे टीचर्स नू एड्रेस करना है मैं कह तो सब तो औखा काम है because when you are going to address teachers Ulte Bas Bareilly nu, the call is sending to Newcastle. There are all teachers who are better than me as a teachers and all teachers are internally a resource person. मैं तो कैमरे आगे बोल लेना ता ठीक है नहीं तो तुसी मेरे तो better ही करोगे मैंने पता है वो दिखाओगे तुसी आज मैंने जलवा. See, dear teachers, this is an interactive organic workshop. Now you will put a question, sir, what is the meaning of organic workshop? It's not chemistry of hydrocarbons like CnS2n plus 2, CnS2n plus 1. No. Organic workshop is that workshop where we will be interacting with each other. ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢੀਏ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀ टीचर ਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ कोई गल बदल गई गब्बर किताब से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है खुद गब्बर टीचर को सिर्फ एक ही इंसान बदल सकता है खुद टीचर nobody can tell you how to teach nobody can tell you how to explain you better know
I'm just going to, roots and canal ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ energy ਦਾ. Before I start my session, I used to have one prayer with the permission of Akal Purkh, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I invite mother teachers here, and before I invite anyone, I swear in the name of Almighty, I never ask any question to any teacher. मैं किसी भी अध्यापक जी को कोई प्रश्न नहीं पूछांगा. यू कैन आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. तुसी मैं तो जिन्ने क्वेश्चन चाहो पूछ लो. इफ आई नो द आंसर आई विल. अगर मैनू द आंसर आंदा होएगा मैं आंसर कर देंगा. इफ आई डोंट नो द आंसर मैं कहूँगा मैनू नहीं आंदा. जनता की राय ली जाए, आपसे पूछेंगे. अगर आपको भी ना आया तो फिर सानू मजा आएगा. सो आई इन्वाइट मदर टीचर्स हियर. प्लीज ज्वाइन मदर टीचर्स. Well, dear teachers, first of all, it's a great honor for me that I am standing on the same platform where the mother teachers are standing there. Can you introduce yourself, sir? Though already you have introduced. This is a mic for you, and ये mic हाथ में पकड़ लें. Yes, please continue. Thank you, sir, for giving me immense pleasure. I am feeling very proud to stand before you. Okay, let me introduce myself. Myself, Harman Singh. I belong to village Pundar, nearby. I think you have heard about, Anna. So I have done my graduation from Muksar and pursuing my masters in history. Thanks, sir. You must applaud everyone. Sir, you have to be with me here. Yes. Imagine you are. Check the mic. Imagine you are a student of 10th class. Okay? Okay. And you have topped in 10th class ICSE school here. Okay, sir. Fateh Global. तो तुसी globally Fateh बुला देते. You are topper, right? And I am your teacher. Okay. I am your Teacher. And सर भी तेरे टीचर है, मैं भी टीचर है. वाइस प्रिंसिपल सर, ठीक. Yes, sir. एंड मैं रात ਨੂੰ रिजल्ट देखा. कैन यू स्पीक इन मदर टंग? थैंक यू वेरी मच. क्योंकि लॉन्ग बैक ना जी मैनू एक स्कूल ने बुलाया, कहते सर यू हैव टू एलोक्यूट इन इंग्लिश एल्स अदरवाइज यू विल बी फाइन फॉर दिस मच मनी एंड सो ऑन. तो आई हैड टू एड्रेस ए सेशन विद द पेरेंट्स. तो मैनू हुन इंग्लिश बोलनी पई. तो सिंस देयर आर टू ग्रेट इंग्लिश पर्सनालिटीज आई सेड what in ambience and exuberance and opulence of this august gathering I am enthralled to see the doting care and affection of the honorable management principal ma'am and vice principal and coordinator and chairperson. उत्थे एक बंदा बैठा सी अगे, कहता सर जी आपकी गुस्ताखी में कुछ आख सकता हूँ. मैं कहा बोलो. कहता आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है. उन्होंने सोचा कहते पता नहीं कित्थों आया. कहता थोड़ी बहुत आपको हिंदी आती है तो उसमें बोल दो. वैसे आप हो कहाँ के? मैं कहा गवर्नमेंट स्कूल पकड़ाना, पिंड दादू मजरा, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला. वो तो पंजाबी है, वो पंजाबी बोल रहा है यार. तो कैन आई स्पीक पंजाबी? हाँ, इफ समवन वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, वेलकम, वेलकम, राइट? So you are a topper in ICSE school and your photograph is published in the newspaper from ICSE. And मैं वो अखबार चक्या सर ते मैं प्रिंसिपल मैम इन बर्फी खवा रहे हैं तो साड़ी अखबार च फोटो आ गई. अगले दिन मैं मलोट है ना, मलोट में जिथे भी सब्जी वाले को कदी नहीं गया भाई आलू किद्दां लगाए हैं, अगे अखबार कर देना. ब्रेड वाले नूं कहना अखबार कर देना. वो कहना जी की है? आ देख फोटो, साडा बच्चा फर्स्ट आया है ना. फिर मैं फोटो खिंच के स्टेटस लगाया. साड़ना भी था लोगों नूं फेसबुक ते, व्हाट्सएप ते, इंस्टाग्राम that my student, our student tops. School ch enter kar di brochure te prospectus te you will see his photograph. Entries the photograph. Now I'll ask you one question. Do you know how to write? Yes, I know. You know. Do you know how to speak? Yes, I know. You are speaking already, है ना? Yes. Do you know how to walk?
Yes. I Just know. walk. Yeah, stop. Now come back, come back. He knows how to write, he knows how to walk, he knows how to talk. है ना? I'll ask you one question. सर बट आपने स्टार्टिंग में कहा था मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूं. मैं आंसर कर दूंगा. ठीक है. I love you. Had these people not been in your life, will it be possible for me to get you the first rank? अगर ये टीचर तेरी जिंदगी च ना होंदे तो क्या मेरे लिए सर लिए सब लिए +2 10th वाले लिए पॉसिबल सी कि तुम टॉप लेके आंदे? No, never. The real credit goes to Teachers. and you are all jealous. ताली तो बजाओ. ए टीचर थोड़ी है, इन्होंने कोई मैम नहीं कहता, कोई भूआ जी है, कोई आंटी जी, कोई मासी जी, कोई गुस्से च पढ़ाउंदी है चाची जी, ठीक है, कोई थोड़ी एज हो गई तो दादी अम्मा. Nobody call you mother, nobody call you teacher. They have their defined relation. How's that, ma'am? और पूरे एरिए दी हर घर दी कुंडली ना कोल हुंदी है कि किस दे घर च की हो रहा है. स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आके आपको बोलते हैं. और मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक फादर टीचर नहीं देखा, मदर टीचर ही होते हैं. कोटि कोटि नमन तानु और स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द मदर टीचर्स. गुड क्लैप. थैंक यू वेरी मच. सो बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज माय प्रेयर जी. सो थैंक यू. प्लीज यू कैन टेक सीट. Effective teaching is our topic today, and this topic is going to explain so many things, how we can create effective teaching in class. Already you are doing it, you are all masters in that, and how we are connecting with the students, and how we have our own mood swings to control. So many things we have to discuss today. Hope you feel all comfortable. चलो, मेरे खुद नु क्वेश्चन है, विपिन सर, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ टीचर? मैं कदे कदे अपने आप नु क्वेश्चन पूछदा है कि अध्यापक कौन हुंदा है? हु इज टीचर? Are you getting what I am saying? I'm used to this place. I've done so many workshops in Gaddarwaha, Shri Muksar Sahib, Dabwali. So मेरा ही परिवार है सारा, and you feel comfortable. कोई भी चाहेगा दसना कि ਤੁਹਾਡੀ नज़र च अध्यापक की होंदा. Actually my workshop is organic. You will not find the content from YouTube, Insta. ਆਪਾਂ खुद content बनावांगे, अपना content होएगा. फिर अपनी प्रॉब्लम ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे. अगर वो प्रॉब्लम ਦਾ सॉल्यूशन मिल गया, बहुत अच्छा हो जाएगा. Anyone who would like to tell what is the real meaning of teacher in one's own words? Oh, WhatsApp वाला ना दसना T for this, E for this, नहीं. Anyone? May I request you, ma'am? Yeah. ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਲਪੁਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. Okay, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੋਲਪੁਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ, ਚਲੋ it's on. ਔਨ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਹੈ. ਬੋਲ. Good morning, everyone. Okay, real teacher is such a real path of our life, and देखो, जैसी संगत सादी है वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी होगी धूप. दो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ इंग्लिश ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. शी सैड मैं पंजाबी बोलांगी, पर देखती इंग्लिश शुरू हो गई. यस बेटा बोलो. I asked na कि could I speak. मैं कहता पंजाबी बोलो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ये मैं फटना सी कर, ਹਾਂਜੀ, हाथ मूव कर. हाँ जी, फर्शो अर्श अर्श ते पहुंचा पहुंचा देंगे. ठीक.
ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ? नो। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ओके। दिस इज योर वर्कशॉप। ओके। हाँ। और बस थैंक यू। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸੱਚ ਅ ਥਿੰਗ, ਯੂ نو। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਫਤਿਹ ਕਮ ਇਨ ਗਲੋਬਲ। ਯੂ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ, ਤੂੰ ਨਰਵਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? नहीं। ਪੱਕਾ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नो। ਆਏਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆएंगे, प्रॉमिस? पक्का। टेक्स इट। थैंक यू। थैंक यू। शी सेड दैट टीचर इज दैट ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਬੇਟਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਯੰਗੈਸਟ ਚਾਈਲਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਯੈਸ। सेम क्वेश्चन। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फॉर मी मेरे वास्ते टीचर ऑनेस्टली सेइंग मेरे एक टीचर सी। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੇਲਡ ਇਨ SST ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ 4th ਕਲਾਸ। तो मैं बहुत डरती ਹੁੰਦੀ ਸੀ SST ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। तो मेरे एक सर सी मिस्टर शुमिंदर सिंह, हजे भी मैनू याद है, ही टॉट मी दैट इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ सो ईजी। मैनू सारे जज करते सी कि इन्हें कदी नहीं करना, पढ़ना ही नहीं। उन्होंने कदी जज नहीं किया। उस दिन तो मैनू फील आया कि टीचर थोड़े जे पनिश कर सकते बट कदी जज नहीं कर सकते। टीचर विल बी नैवर जजमैंटल, ही विल बी योर फैमिली, जिन्हों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਿਖਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾ। ਤੋ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਾਪਾ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸਮਵਨ ਹੂ ਰੀਅਲੀ ਨੋਜ਼ ਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਨ ਡੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। Not him but I will be like him. Your name is? Parul. Parul? Yeah. Sorry, I got a little emotional. No, one has to be emotional. This is the difference between NI and AI. NI is natural intelligence, AI is an artificial intelligence. Artificial intelligence is never emotional. Okay? So, that makes the difference, है ना? Parul, first of all, you are very honest. Yeah. इसने क्या मैं SST च मेरे मार्क्स घट आए, openly admit कर रही है, and nobody is appreciating you, you know. This is very bad. After that, I topped in that. That's it. Pursuing history. That's the real पंजाबियत, Yes. है ना? I'm doing politics and history. ओ मेरे बच्चे गल कमा तनु गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, ठीक है ना? जेड़ा अटैम्प्ट करेगा उसनू ही मुश्किल आनगियां। जेड़ा बंदे कहते मैं तो जिंदगी च कभी गलती नहीं कदी, इस पापी को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ने पहला पत्थर मारे कोई सारे असी कहने हम नहीं चंगे बुरा नहीं, बस बिलीव इन दैट, यू नो। सो पारुल तुसी बहुत बड़ी गल कही कि टीचर सानू कुछ सिखावे, नाले ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ the way you present yourself na, that is wonderful. Whenever I go to any school sessions I invite the young teachers na, they are very energetic and very vibrant because of the schooling. ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਿਕਨ, ਕਿਤੇ ਜੋਕਰ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। am I right? You are absolutely right. Teacher, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, teacher never teaches but teaches how to learn. ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। How's it? Very motivational and truth. ये मैंने आपसे अभी अभी चुराया है, And truth actually. तभी तो मुझे कोई कागज की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक सर सेशन ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ this is the chapter.
he always gives me a story. Find it. Where is the answer? It was me who was learning. He was like, find where is the answer. I taught you the lesson. You have to Please, find mic here. it. Sorry for that. Yes, So yeah, it's true. it's true. Yep. God bless you. Any question you would like to ask me? Yeah. Yeah, that's why it is tough to teach. Very good Like question. I am youngest here, and I have No, joined You are not from youngest. 2-3 months. You are not youngest. I am the youngest. Yes. अब बोलो. So like when I was a kid, I thought that it is very easy for a teacher to teach. They come and they are like just blah 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 and they go. It was so easy. But when I become the teacher, I was like, no, there are a lot of things. A lot. It is not like you come and you teach. It's like you have to see who is learning, who didn't get the answers, everything. And I was like, I went my home and I went to my mother and was like, you are amazing. Who is the selection committee member of this school staff selection? Big round of applause for those people. Because पहली गल तो टीचर की ਹੁੰਦਾ ना स्टार ਹੁੰਦਾ स्वैग वाला टीचर जाए वेल ड्रेस्ड यू आर ऑल एंड मतलब टीचर ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ એનર્ਜੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ that's why you are nation builder okay wonderful you're absolutely right anyone else who would like to tell something to the same who is teacher according to them in their words May I go? it's your wish it's your session you cannot sir you have to introduce first of all yourself ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਡੂ ਕਮ ਟੂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਰਾਈਟ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ Good morning, everyone. My name is Sukhbir, and I am from Lot, and I have completed my BCom graduation from DAV College, Lot, and I am SSC teacher here, and I also have done a master's in economics, and I'm preparing for civil services examination. That's why I'm teaching here SST. You are meeting the future deputy commissioner. Vaheguru blessing you. Yes, sir. Yes, thank you, sir. Yes. Yes, your ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਰੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ Sir, according to me, teacher is those ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈਸਨਸ ਆ ਉਹ ਦੇਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਓਕੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੈਸ ਸਰ ਓਕੇ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਭੇਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜੋ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਓਕੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਾਈਟ ਯੈਸ Sir, my question is that when I teach something to students, some students are not listening us carefully. So we are saying them, listen to us. So why they are not? Have you noticed that they are all listening to you very carefully? Yes, they are listening. They are listening to you carefully. ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਮੀਆਂ ਕੱਢਣਗੇ ਇਦਾਂ ਖੜਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਖੜਦਾ ਸੀ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ यार ये किस तरह की वर्कशॉप सर कर रहे हैं, ना तो कोई तारे ज़मीन पे दिखा रहे हैं, ना ये थे कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं। टॉपिक है इफेक्टिव टीचिंग, ये कट कितों रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग, इतने तो कट रहे हैं। हर बंदा हर टीचर जड़ा है वो मैं अपनी भी परिभाषा दसांगा। पहले मैं तुहाडे पूछे बेटा योर नेम इज ਸੁਖਬੀਰ। सुखबीर, मेरे बच्चे सुखबीर सिंह अगे मलोट। ਯੈਸ हाँ उत्थे बादल भी बादल। नेड़े है। मैं उन्होंने स्कूल विजिट किया मालवा, तो गॉड ब्लेस यू। सो मैं ये कहना चाहना सुखबीर सर कि साढ़े ना साढ़े मूड स्विंग्स होंगे टीचर्स दे। ਹਾਂਜੀ जे तो घरों असी वधिया मूड च निकले ਹਾਂਜੀ और जदों असी वधिया मूड च निकल के क्लास च एंटर किया, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਰ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕੋਣੀ ਮਾਰੂੰਗਾ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਏ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं सारे टीचर्स ਨੂੰ कहना भी जो भी साढ़े कोल साडा पैरामीटर्स है उस दे विच रह के स्टाइल नाल जाना चाहिए। तुसी मेरी कार खड़ी है इत्थे, तुसी देखना 3-4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, शर्ट ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦੀ ਚੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਐਂ ਗਦਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਠੀਕ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਆਰਨ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। असी सिमरन करते हैं, असी जाप करते हैं। तुसी कदी दरबार साहब जाओ तो तुसी एक पासे परिक्रमा ते बैठ जाओ और उत्थे डिस्पले तो आ ही रहा होंदा है। तुसी ध्यान नाल बाणी दा सरवण करो, तुहानूं 2-3 घंटे पते लगणगे कित्थे निकल गए। Am I right? Why? Because we people have got that kind of technology, that kind of quality, that kind of ragas, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਨਿਸਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਮ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਜੀਪੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਟੀਚਰਸ, ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹੋ। ਯੈਸ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੇਫ ਟੇਕ ਆਫ ਤੇ ਸੇਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਫਲਾਈਂਗ ਇਨ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ 35,000 फीट। फिर एक हिंदी च भी बोलता है, हम 35,000 फीट की हाइट पे उड़ रहे हैं। एक 40 मिनट के बाद हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, है ना? यस। नाल वाला बंदा कहेगा, ओए एमडी नूं वायरलैस मार। एमडी साहब ਅਸੀਂ 40,000 फुट ਤੇ उड़ रहे हैं, फिर इंडिगो हाँ जी तनख्वाह ਵਧਾਉਂਦਾ कि जहाज क्रैश कराइए? ऐसी नहीं कर सकते। सेम इज़ द रोल ऑफ अस। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਕੈਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਕੂਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬੜੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਕਮ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਪਰ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਪਰ ਹੇਅਰ। ਯੈਸ। ਜਸਟ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ Am I right? ਯੈਸ ਸਰ They'll get tuned to you. So I promise you, if you're teaching with the same energy throughout the class timings, student will not deviate and either repeat time and again one thing. बार बार एक चीज़ ਨੂੰ repeat नहीं करना, ਠੀਕ ਹੈ है ना? सो उन्होंने इंटरैक्टिव बनाओ थोड़ा जिहा हिस्टरी। बेटा अगर भारत ਦੀ फ्रीडम स्ट्रगल ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ फ्रीडम फाइटर ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਰ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਕਰਕੇ ਟੀਚ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਲੇਵਰ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੇਵਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਲੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਐਗਰੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਬਟ ਯੂ ਡਿਸਕਵਰ ਯੂਰ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗਸ, ਯੂ ਨੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਨੀਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਵੰਡਰਫੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ। ਆਈ ਗਿਵ them real life examples। ਮੈਂ ਫੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੱਥ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ them geography ਹੈ ਨਾ, ਅਬਾਊਟ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ, ਸੋ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਆਈ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਲਸੋ। ਵਾਓ, ਗ੍ਰੇਟ, and then ਗ੍ਰੇਟ। they have seen, they learn better with their imaginations, so I use this method. For example, वैसे I don't know geography much। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਇੰਡੀਕਾ, ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ Indica. troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, Yes. the various layers of the atmosphere. Am I right? So hope it is okay. Dear teachers, मेरी eyesight ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, मैं थोड़ा ਜਿਹਾ mature लगातार पाई है उतार दा। I don't need it, right? Okay. So now coming back to the point, my honorable teacher said कि एक story telling ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਚੌਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਚੁਰ ਲੱਗੀਏ, ਹੁਣ ਲੋਰੀਅਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ No, ਡੀਸੀ sir. ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲ। Thank you sir. The credit doesn't go to you, the credit goes to your teacher and parents. Yes. God bless you. Thank you. Thank you. देखो ताली नहीं कोई पसंद। Yes, please. First of all, you introduce though already. Yes. Good morning, everyone. My name is Navneet Kaur, and I'm here an English and mathematics teacher. Wow, English and Mathematics. what a combination. Applaud for me. My people. Yes. Yes, ma'am. And I have done my graduation from Badal Girls College, and I'm here to get the students learn from me and learn myself as well. Like ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਬੀਐਡ ਕਰ ਲਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੋ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜੌਬ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਮੈਡਮ ਹਰ ਸੈਲਫ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਵਨਸ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਮਦਰ ਤੋ ਵਨਸ ਕਲੈਪ ਫॉर ਮੈਮ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਾਈ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਟੀਚਿੰਗ ਆਈ ਮੇਕ the students feel around myself that they are safe. They can share everything with me, their life, their problems, their family problems, their education problems. Apart from my subjects, even I help them. अगर उन्होंने कुछ समझ नहीं आਉਂਦਾ, even their parents feel happy with me. ਤਾਂ I think I'm blessed with that. So, thank you. मुझे जलन हो रही है कसम से इतना अच्छा टीचर बड़े किस्मत वालों को मिलता है मोरओवर आई विल आस्क यू नवनीत मैम My name is Navneet. हाँ नवनीत मीन्स बटर यस तुझे लगांदे नहीं हो पर मैंने पता संधू मैम ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿਸਤਾ ਕਲਰ ਕੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਤਾਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਸਟਰ राजन है तो राजन सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मेरा नाम राजन है और मैं पीपी पब्लिकेशन में एरिया मैनेजर हूँ और मैं 4 डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ और आज की जो वर्कशॉप है वो विपिन सर ने कंडक्ट करी है मतलब उनके साथ ही हम कर रहे हैं जो बेस्ट मतलब आप देखोगे तो बेस्ट ही उनकी वर्कशॉप होगी सर थैंक यू तालियां इन एडवांस राजन सर इस एरिया के शेर हैं लेकिन उसमें एक बब्बर शेर आधा घंटा पहले आ गया और मैंने इनको पूछा आप कहाँ कहता मैं आ रहा हूँ मैंने कहा स्कूल में कोई है मुझे लगता कभी कोई आया नहीं कहता जी आप जाओ मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कोई मतलब मैम शी इज़ बास्किंग इन सन एंड ऑल एंड लेटर शी टोल्ड मी मैम सर एक्चुअली ना मतलब वी वर जस्ट प्लानिंग टू यू नो व्हाट यू से दैट वेलकम यू बट समथिंग हैपेंड लॉन्ग बैक व्हेन दैट jury came for the inspection so one of the main person came 1 hour earlier so we were the 3 people to greet him anyway so sometimes I remember Jaspal Patti ke कहते जी घंटा लेट जाओ ज़्यादा वैल्यू पैंदी है anyway but मैं गल कहना चाहवागा first of all thank you to PP and I'm telling you that PP mathematics I'm going to make video first to 8 my own that I'll share very soon the link and God bless you thank you Rajan and love you थैंक यू गॉड ब्लेस यू सो मैं संधू मैम को मैम कैन आई शेयर मैं मैम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਪਨ ਸਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੈਮਸ ਨੇ ਬਟ ਆਲ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਬੈਸਟ ਸੋ ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ not of your mother says but teacher is a teacher you know God bless you wonderful observations so any question Right now not, but I will ask you later on. promise Yes. yes कहते था याद यहाँ आने से पहले आ जाएगा याद यहाँ के जाने के बाद God bless you thank you very much anyone else who would like to tell there is one person who is smiling and giving me faint smile and looking left to right the 2 guys I invite them both please so introduction Good morning everyone.
My name is Rajat. I am post-graduated in chemistry from DAV College, Apohar. So the main thing I want to tell here is the definition of that you asked teacher. So teacher is a guru, gu plus ru, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ. And not only this one, but there are many definitions. अगर आप लिखन बैठ जाइए तो वो पूरी नहीं कर सकते. ठीक है. सो टीचर ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਾਮੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਰੋਡ ਫॉर सक्सेस कह लो, कैंडल कह लो, बहुत एग्जांपल्स हैं. ठीक है. कंटिन्यू सर. ओवर सर एक हाथ में लाना. देखो, what a wonderful teacher. He is my guru. He taught me CnS2n plus 12 Kn, CnS2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde, C6S6 benzene. Benzene is the calcular ring structure. The pi electrons are always moving. Ortho meta para. Am I right? When a mixture of methane and chlorine is heated to 250 degrees centigrade or exposed to ultraviolet light, then chain initiating steps takes place. Chlorine absorbs the ultraviolet light. Chlorine free radical ethyl attacks the methane and methyl carbonium and chain terminating step. Am I right, sir? वाइड मैच, यू आर वेरी नेगेटिव. सो सर ने मैनू हाथ मिलाया. मेरे हाथ मिलान नाल मैं कहने लगे all electrons revolve in certain permissible orbits where angular momentum is nh/2 pi. सर ने मेरे नाल हाथ मिलाया. सर कहते all gas molecules are spherical. They move. They are very hard to compress. They move in random direction. Their collision is instantaneous. The distance is called free path. Their collision is elastic. The volume is negligible as compared to the total volume of the gas. Their impact on the wall causes pressure. Sir ने इन्ना वधिया टीचर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ केमिस्ट्री ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ केमिस्ट्री पटर सिखाती. और श्रीदेवी नहीं है ये. Spherical, hard, random, instantaneous. Distance free path, elastic collision, volume negligible, impact causes pressure. This is effective teaching which he is teaching to me. You understand? The random revision. Wise always revise. पहले 10 मिनट हफ्ते में 3 दिन कभी भी नया मत पढ़ाओ. Ask them a random question. Okay, what are quantum numbers? N, L, M, S. What is N? Natural numbers. What is L? Minus L through 0 to plus L. Am I right? Azimuthal quantum number. Spin plus minus half. Means that बच्चा कदे भी तुसी बच्चे दे उत्ते ना छड्डो भी तू घर जाके पढ़ेगा. ना स्कूल च ही पढ़ा के भेजना है. जो नहीं पढ़ता तो उसनु को बेटा तू घर आ जा, मैं तेनों एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, फीस ते तू नहीं लूंगा. हाँ जो तू किसी होर नूं ले आएगा आप ले लांगे. क्यों जी? मैं दे अगेंस्ट नहीं है. सपोज करो जे तुहाडी मार्केट वैल्यू है ना मार्केट दे विच तां तुहाडे स्कूल दी वैल्यू भी है. आई डोंट नो वेदर आई एम सेइंग राइट और रॉन्ग बट इट इज अ फैक्ट. तुसी अपने आप नूं स्टार बनाओ. You are the superstar. सर एनर्जी आंदी कित्थों है? महात्मा गांधी को मिन्नत आंदी है. सर मैं झूठ नहीं बोलता. सारी गल मुकदी उसते है प्रैक्टिकल. बट द रियलिटी इज दैट when we deliver the subject we don't think what we are getting. I've given you the example of the pilots. So you are the best teachers already. So honorable sir, this is mic for you. And please एक बारी सरली ताली तो बजाओ. देखो हाथ मिला के केमिस्ट्री सिखाती मैंने. सर प्लीज. May I speak? सर ਤੁਹਾਡੀ वर्कशॉप है, मैं तो वहीं खड़ा है जी. Good morning everyone. Thank you so much for giving me opportunity. This is the first good morning where morning is good. Am I right? Oh खुश हो? नहीं चला मैं जावा? कहती yes sir. ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੋਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੀ. ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਮਰ ਗਈ ਜਾਵਾਂ. ਯੈਸ ਮੈਮ. Good morning everybody. My name is Prince. I hail from Malot and regarding my qualification I've done my master degree from a lovely professional university Jalandhar. So
now I would like You to did answer masters in English. Oh, that's great. So I would like to answer to the question if you ask. I don't have any question. Then I have a question. Yes, sir. So whenever I go to class, so what I feel, the students sometimes are not paying attention to, as Sukhveer sir already has discussed with you. Yeah. So what is the problem actually? Why they don't pay attention? Not everybody, but there are a few students I see don't pay attention to the lecture. They don't listen to me. I just want they not to be heedless. They pay heed to my lecture and give the best result. Which class you are taking? I'm teaching from 4th to 7th. I don't think 4th to 7th, 4th, 5th, 6th people have any girlfriend problem. They are disattracted and all. 7th onwards, there is a probability. I'll tell you, Honorable Sir, Prince Sir, you are the Prince, and the first time I'm meeting two Prince today. So one Vice Principal Sir and Honorable. Well, Sir, I'll tell you one thing. There is a lot of disattractions, not because of you. You should not feel down that that because of you they are not paying attention. Nowadays, the problem is that there is so many COVID and so many things, SARS and all. There is one disease called impatience area. Impatience area. बच्चों च patience ही नहीं है. They want instant food. They want Swiggy, बस फोन के तो बाहर आ जाए. Because their conditioning is not proper, my dear teacher. Conditioning, what is the meaning of conditioning? एक बारी मैं एक मदर ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਕਹਿੰਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਲ ਹੀ ਲਿਆਈ ਹੈ 2 ਲੀਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ not that conditioner we want. We want that we people are basically are away from our kids. ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ देयर विल बी अ मैसेज कि सर ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ. Am I right? You, my dear sir, my dear Prince sir, I'll tell you one thing. The only one mantra is that you have to come and fall in love with the people. Don't watch movies in the theater, but people are watching Dhurandhar. Why? Because it's connecting. The content is connecting. The performance is connecting. Honestly speaking, we both were planning to watch it, but we have cancelled now. I don't know. This is a personal matter. But one of my friend is acting there, Rakesh Bedi ji. He is performing. So मेरे को तो देखनी पड़ेगी और अपनी सेल्फी भी डालनी पड़ेगी. सर मैंने सेंड किया आपको. Anyway, तो मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा? मेरा क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ. बच्चे को ना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली, इफ आई कम हियर, मोमेंट आई एंटर्ड हियर विदाउट रिकॉर्डिंग, आई टोल्ड कि दिस इज योर वर्कशॉप. एम आई राइट? मैंने बोला ना, डू यू फील द सेम? दिस इज योर वर्कशॉप. वो बच्चा क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा? सभी नहीं कर रहे कि एक दो नहीं कर रहा? There are a few students, not everybody. I don't know why they are digressing from the key point. What I'm telling them. What you should do, one thing, my dear friend, that what you should make a one-to-one meeting with them. And don't tell that you're talking to him as a teacher or something else, like fatherly or brotherly, something else, and share some good stuff of their choice. For example, if they like whatever the food, you just bring them. Just we can call it, weaning period. Weaning. So weaning period. जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे 3-4 महीने के, कोई ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚਟਨੀ ਲਗਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਐ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ. है शेर का बच्चा है, टेस्ट बन गया. So what I am saying is that you need to counsel them without knowing them that you are counseling them. Yes sir. That's nice. Please go ahead with some more tips. This is one of the tips which मैं ऐ नहीं कर रहा तुसी ये करो. थोड़ी थां ते जे मैं हूँगा तो मैं ऐदा करांगा. ठीक है? I'll fight till last. मैं हार नहीं मनांगा, मैं लग्या रवांगा. वो सुबह कभी तो आएगी. क्योंकि बच्चा जो है ना, वो कनेक्ट कैसे करता है. बच्चा अख दी घूर, असी जो बहुत छोटे होंदे सी, माई मदर इज आल्सो प्रिंसिपल, ते असी किसी दे घर जाना मदर दे नाल, तो उन्होंने समोसे रख देने. ओके, जो समोसे रख देने तो असी हथ है चुकना, माँ की अख को ऐ आंदी हथ बैक आ जाता सी. मदर ने इशारा करना, यस, देन means that is missing now.
That is missing now. Now the students are not willing to accept us. Why? Number of reasons. I don't blame social media. I blame myself that I am not able to condition. If my workshop is not discussing the answers, questions, your questions honestly, I am no more a resource person. I have to be very honest कि मैं क्या करांगा. मैं सर, आपका नाम? Prince. तो प्रिंस सर, and your name? Rajat. So, my name is Vipin Sharma. Google Vipin Sharma Physics. I'm not Prince, right? तो आप क्या करो, आप उन बच्चों को मिलो, गेम खेलो उनसे. मेरे पास लहरा मोहब्बत एक जगह है आपके बठिंडा के पास. तो लॉन्ग बैक एक लड़की पढ़ने आई, उसके मार्क्स बड़े कम थे. I conditioned her every time. I encouraged her. She tops in India. She's a doctor in Patiala, gynecologist. So same is the concept, sir. You have to be like a missile which is following the infrared radiations, and you kept on chasing them. If you are really serious to do that, according to me, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको उन बच्चों के साथ स्कूल टाइमिंग्स के बाद भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा. जब भी उनको एक लगेगा कि यस ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई, जैसे मेरे गुरुजी ने हाथ मिलाया, मेरे को केमिस्ट्री सिखा दी, तो वही गुरु, किसी ने बोला कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए, तो फिर गुरु क्यों हैं हम? तभी तो हैं. मैंने आते ही बोला कि गब्बर किताब से तो मैं एक ही आदमी बचा सकता है. खुद गब्बर टीचर को, मैं सर को नहीं बता सकता ऐसे पढ़ाओ, मैं आपको नहीं बता सकता ऐसे पढ़ाओ. हाँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे मैं हैंडल करूँगा, मेरा टेक्निक ये होगा कि मैं उस बच्चे से दोस्ती भी डालूँगा. बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते थे, डिसअट्रैक्टेड थे, अच्छी दोस्ती बनी, मूवीज़ भी देखी उनके साथ, क्रिकेट भी खेली, ठीक है, बाद में उनको पढ़ने में भी लगाया. तो टीचर बनना नहीं आसान, ये आग का दरिया डूब के जाना है. एवरीबडी इज नॉट अ टीचर. टीचर्स आर, आपको सभी को पता है, वो दो तरह के होते हैं, बाय चॉइस, बाय फोर्स, है ना. तो हम लोग बाय चॉइस हैं, तो सोल्यूशन तो मिलेगा. मेरे पास इसका ये सोल्यूशन है जो मुझे अभी समझ आ रहा है. अब आपका अंदर का क्या आंसर है वो आपका इंडिविजुअल है. दैट इज ऑर्गेनिक वर्कशॉप सर, विदाउट हाइड्रोकार्बन्स. That's great. So I'll pay attention to it. I hope the advice you have given me will definitely have a good result. You know, he speaks wonderful English. He speaks the way that he can live behind English. He can talk in English. He can walk in English. Because English is a very funny language, you know. God bless you. I love you, sir. मजा आ गया मिलके. Thank you so much, sir. Ma'am, It's a wonderful pleasure. सिलेक्शन कमेटी के लिए एक बार फिर से तालियां. God bless you, sir. In fact, I would like to say something about you. Yeah. After a long time, Huh. I've seen somebody, because I followed Dr. Shakshi Tharoor. You must have heard about him. So I think I have never got an opportunity to meet him face to face, but you are the one. I think I'm really feel blessed, and you have motivated me a lot. Thank you so much. Of course. And English is the language that I really love to speak, because I've been speaking English for almost 10 years, and every day I have improved. So I think I've improved double today. I'll tell you something about the English. I did my 10th in Punjabi medium. When I entered in a school, college, pre-university in Patiala, so in I had got 720 out of 800 marks. I'm the only teacher who has uploaded all certificates on the LinkedIn. What happened? Madam Batra in Modi College, no, Professor Sundar, he is my Guruji also, author of Pradeep Fundamental Physics. See, he speaks like this. You see, like this. Stand up. Yes. What is yunt? Jonta. It is the standard measurement of a physical quantity. Physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain rules. ਉੱਥੇ YPS, ਸਨਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਏ, ब्रिटिश होए, मेरा नाम छेड़ पाती. आई फॉलो गुरु गोविंद सिंह जी. मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं मतलब 507 वर्कशॉप कर चुका हूँ स्टूडेंट्स के साथ. जहाँ भी मैंने वर्कशॉप किया है,
मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में, वीर बाल दिवस के बारे में ज़रूर बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली साढ़े पंजाब च भी बहुत सारे स्कूलों च नहीं पता कि वीर बाल दिवस बच्चों को क्यों मनाया जाता है। दिस इज बैड यू नो आई मीन पार्ट ऑन अस, वी आर नॉट टेलिंग दैम। पता ही नहीं है उन्होंने नहीं पता, उन्होंने पिंकी मोगे वाली का पता है, उन्होंने फलाने वाला सिंगर पता है, बट दे डोंट नो दिस। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट अस एजुकेट अबाउट आवर कल्चर। और एंड आई टेल यू सर, तो मैनू अंग्रेजी नहीं बोलनी आती सी, तो मैं क्या अंग्रेजी सीखा कितना। उदों इदा के कोर्सेस तो होंगे नहीं सी। एक कपिल देव की एड आती सी, रैपिड एक्स 40 दिन में इंग्लिश बोलना सीखो। मैं किताब ले आया, फिर भी नहीं आई। फिर अल्टीमेटली ना व्हाट हैपेंड, आई वॉच वन मूवी जेम्स बॉन्ड्स मून ब्रेकर, उहदे च कबीर बेदी साहब ने रोल किया है, 6 जेंटलमैन बने। मैं कहा यार जेम्स बॉन्ड की मूवी च साडा सरदार भरा दिखाया, मैं भी वेखन गया, तो आई स्टार्टेड इमिटेटिंग दोज कैरेक्टर्स। देन अल्टीमेटली आई थॉट कि मैं सीखा तो किद्दां सीखा, तो मैनू 6 मैम इंटरनेशनल टीचर अंग्रेजी सिखाना आए मेरे घर। इफेक्टिव टीचिंग पार्ट 3 शुरू हो रहा है। कौन कौन? तेजेश्वर सिंह, मीनू तलवार, कोमल जीबी सिंह, निधि रविंद्रन, सुनीत टंडन। दे आर ऑल दूरदर्शन इंग्लिश न्यूज़ रीडर। रात को 9 बजे आते सी, मैं रजिस्टर लैके बह जाना, तो जो जो बोलना उदा ही जो नोट होंदा गया हो गया, क्योंकि उदों पॉज तो प्ले होंदा नहीं सी। उस तो बाद उन्होंने जाके बोलना, तो मेरा नाम लिख दिता कॉन्वेंट वालियां ने डिबेट दे विच। आई हैव टू स्पीक ऑन रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, and you both are English teachers, you might have gone through that prose, My Lord the Baby. तो मैं उससे बोले, मैं कहा My Lord the Baby is a highly moving narrative of a servant's devotion, suffering and sacrifices. It reveals Tagore's deep insight into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. Raichand was servant in Enkul's house. He had been there since the time when he was a child. I started speaking like this. I did practice. I got prize. So जब जब वो बान लग गए, तब रोस्ट। जब तक थोड़ा कोई चैलेंज नहीं ना करेगा, तुसी जिंदगी दे विच उठ ही नहीं सकते। जे कोई थोड़ा मजाक उड़ा रहा है, वो समझ लो थोड़ा फ्यूल अप कर रहा है कि तेरी ऐसी दी तैसी। सेम वे डियर टीचर्स, मेरी डेफिनेशन की या टीचर्स दे, मैम एक मिनट रुको, मेरी डेफिनेशन टीचर दे आई एम गोइंग टू टेल यू। हैव यू सीन कंगारू? बस 1 मिनट मैम, ओनली 1 मिनट। कंगारू देखा आपने? कंगारू की बैली में एक और कंगारू होता है, जहां से मैंने टीचर की डेफिनेशन बनाई। मेरी डेफिनेशन ऑर्गेनिक। जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसके अंदर भी एक स्टूडेंट होता है, जैसे कंगारू की बैली में कंगारू होता है। जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, इनफैक्ट हम अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, अगर हमारे अंदर का स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट से रेजोनेट कर गया, मिल गया, वी आर द बेस्ट टीचर्स। एंड ए गुड टीचर, speak with me, a good teacher is always a good student, and a good student sometimes is a good teacher. आप कभी किसी बच्चे को बोर्ड पे खड़ा करके बोलोगे बेटा तू टीच कर, वो कभी कभी आपसे बेटर पढ़ाता, नहीं भी पढ़ाया ना, बोलो तूने तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाया। दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू मैम, यू कैन, थैंक्स। सो डियर टीचर्स, दिस इज द रियलिटी कि हमारे अंदर ही इफेक्टिव टीचिंग के सारे एलिमेंट्स हैं। हम अपने आप को तो ढूंढते ही नहीं, हम तो किताबा च जे भगवान होंदा तो असीं सारे फरिश्ते होंदे, उनको फॉलो तो करता ही नहीं। कई बार असीं देखते हैं पाठ रखा होंदा है, वो फटाफट 4-4 पेज पलट के सब दा दिमाग होंदा भी फटाफट बस प्रशादा छकीए ते अरदास करिए ते चलिए। बट वी हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। ए गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। तो घरे ना एक बोर्ड लगाओ, साइंस वाले तो लगे होंगे क्योंकि असीं पढ़ाउंदे हैं, मैं तो पढ़ाउंदा जी, आई ओपनली से आई टीच ट्यूशनस। घरे बोर्ड लगाओ, उस बोर्ड दे उत्ते प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करके जाओ। फिर ज्यादा तुसीं क्लास च पढ़ाओगे ना, मैं चैलेंज करदा सर, वो जेडे बच्चे डिसअट्रैक्ट हो रहे हैं वो घट हो जाएंगे। व्हाट इज ए टीचर?
टीचर हु टीचर्स माइंड टू माइंड। कदे कदे बच्चे कहते हैं सर आज पढ़ने का मन नहीं आ, मेरा भी नहीं है यार। सर की करिए, मन जीते ਜਗਜੀਤ। बस ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਲਵ ਯੂ ਸਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਦਰ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਇਨ ਅ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। टीचर एक पूरी टीचिंग प्रोफेशन इज द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशनस। ये बड़ी कोटेशन सुनते रहते हैं असी, बट सर तुहाडा देन तो रब भी नहीं दे सकता। मैं मजाक नहीं करता। एक पासे रब होवे, एक पासे टीचर होवे, मैं टीचर नूं प्रेफर करूँगा क्योंकि टीचर थ्रू ही मैनूं रब मिल जाना, रब थ्रू मैनूं टीचर नहीं मिलना। सो दिस इज व्हाट योर वैल्यू इज। और हर अपने कार ते और हर बंदा अपने स्कूटर ते स्टिकर लगा के लिखो प्राउड टू बी अ टीचर, और नीचे फतेह ग्लोबल स्कूल मलोट। अपनी कार के पीछे स्टिकर बनवा के लिखो। नहीं मैं बनवा के भेज दूंगा, मैं तो नंबर लेना, राइट। मतलब गर्व नाल कहो कि असी वो हैं, गर्व नाल कहो असी नहीं, गर्व से कहो हम टीचर हैं। पहले अपनी वैल्यू तो जानो यार। सानू अपनी वैल्यू ही नहीं पता। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਖਾਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਡਮ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਕਟ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਇਟਸ ਜਨਰਲ ਥਿੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? Many times. Many times. Yep. ਕਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? Many times. Every day. Every day. ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਐ ਦੱਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਤੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਐ ਮਾਰਦਾ ਭਗਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਸਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਨਮੈਚਡ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ 4 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ 2-3। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ 3 ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਦੇਅਰ ਸਰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਮਦਰ ਟੀਚਰਸ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਈਪਰ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ +1 +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਨੱਕ ਟੈ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ +1 +2 ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਦਰ ਟੀਚਰਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਅ ਸਟਾਰ ਟੀਚਰ ਟੂਡੇ। मैं एक जगह लॉर्ड्स कॉन्वेंट स्कूल धूरी लैक्चर दे के आया सीगा 1 साल पहला, तो मैं फिर दोबारा गया स्टूडेंट्स मिलन, तो टीचर उठ के आ गई, कहती सर मैं ना पहले बस च आती। मैं क्या सर तुहाडी गल सुन के मैं बड़ी मेहनत की सर, आ देखो सर मैं नवी लत्ती है स्कूटी। मैं क्या भैणे बधाइयाँ, मैनूं खुशी है। मतलब की है? मतलब ये है कि असी कनैक्ट करांगे ना, बच्चे जान दे देंगे हैं सर, बच्चे जान दे देंगे हैं। मैं रियलिटी दसदा थानू, बच्चे थोड़ी बुराई नहीं सुन सकते। दिस इज अ फैक्ट। वो कनेक्शन और बॉन्डिंग बड़ी ज़रूरी है, वो आएगी थ्रू योर वर्किंग। तो इफेक्टिव टीचिंग में प्रॉब्लम क्या है? इफेक्टिव टीचिंग में हमें डेली का डेली मरना पड़ता है। मतलब हमें अपना बेस्ट देना पड़ता है, और डेली का डेली हमें उसमें कंटेंट डालना पड़ता है। अब इंग्लिश में, जैसे आप इंग्लिश टीचर हो, तो मुझे एक अंग्रेज़ ने पूछा कि इन इंडिया वी हैव सीन, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा भी ना होता, डबोया मुझको होने ने, ना मैं होता ना वो होता। कहता इसमें वज़न भी है, ये भी है, इसको शेर और शायरी कहते हैं। हाउ डू यू डिपिक्ट इन इंग्लिश? मैं कहा वज़न और मिश्रा। पहले मिश्रा सुन। कहता क्या, व्हाट इज़ दिस? मैं कहा आई वॉज फ्लाइंग काइट इन द नाइट।
And how it is possible? How you can fly kite in the night? मैं कहा, it's my will part. I was flying kite in the night. How it is possible? मैं कहा, dog was barking. Barking dog seldom bite. मैं कहा, ये वजन है. Okay. The thing is that you have to be very creative in class. That creation is very important. I am not saying you are not creative. You are already creative. LPU च पढ़े हो. केवल कक्कड़ is my student there. Okay. So LPU च पढ़े हो. And LPU वाले तो वैसे भी lovely professional university तो बर्फी खा के बंदा सीख जाता है बहुत कुछ. So God bless you. Love you. Really बहुत अच्छा लगा सर. परमात्मा Thank you so much. चढ़ती कला रखे और तुसी अंग्रेजी सब नू सिखाओ. Thank you. Thank you. The way he speaks, you know, even ke science teacher should learn something from him. The way he speaks English. And they are all jealous of you. Thank you so much, sir. It's nice meeting you. Same here, sir. जीते रहो. Thank you, sir. Sir, chemistry में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? No problem. Thank you, sir. Thank you. एक बार मेरी बिरादरी दे ने तादा है कहंदा बंदा अपनी जा मैं किते बाहर जाना ना मैंने कोई सरदार भरा मिलदा मैं घुट के जप्फी पाऊंगा मैं कहूंगा एक बार मैं पटना साहब गया तो उत्थे मैंने एक सरदार भरा मिलया मैं कहा सत श्री अकाल भाजी गऊ घाट किधर है गुरुद्वारा कहा बोलता है हम नहीं जानता हूँ वो बिहारी सी बेचारा तो मैं कहा यार चलो एनीवे सो एनी केमिस्ट्री में यू फेस अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इफेक्टिव टीचिंग Sometimes it's not visualize that we can. So students ਨੂੰ visualize करवाना बहुत typical task हो जाता है एक teacher ਲਈ. I'll tell you something very interesting, which because it is connected effective teaching. Sir, never teach 10 minutes. Random revision. Yes. Random revision from any chapter, any topic, you know, you should just enter in the class. मैं किथों सीखा बाबे कोलों. बाबे ਜਦੋਂ ਵੀ सत्संग ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ. ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ हैं सेम वे यू डू यू एंटर इन क्लास बेटा चलो आज मेरे साथ साथ देखो कितने लोग करेक्ट बोलते हैं है ना रेडी यस Henixer, helium, neon, argon, krypton, generon, all except helium had got 8 electrons, octet rule, like that. Negative part of addendum goes to that carbon atom to which lesser number of hydrogen atoms are attached. Markovnikov rule, whenever you are going to have an addition to unsymmetrical alkenes. हालांकि chemistry मेरा subject नहीं है, हाथ कमल अंदर तादा रहे हैं. So, logic क्या है? 10 मिनट तो सी रिवीज, मैं practically करके दिखा रहे हैं. तुम प्रवचन नहीं देके जा रहे हो, आप ऐसे करो, ऐसे करो. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਰ CnH2n+2 alkane ਇੱਥੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ yes sir it really works but understanding matters so that's why I always run for that concepts or the visualization. Sir, I'll tell you one thing, getting marks is not a rocket science. Yes, but how to attempt a paper, that is a rocket science. Do one thing, sir. All teachers make a question paper, make solutions, distribute the photocopies to the students. You know, whenever any board, ICSE, CBSE or any board ask you to evaluate the answer sheets of the students, 20 years I have been the examiner, head examiner. So they hand over you the answer key. Steps लिखे होते हैं कि इस स्टेप के इतने मार्क्स क्योंकि यहाँ सभी स्ट्रीम्स के टीचर्स हैं तो इसलिए मैं किसी टॉपिक को नहीं बात करूँगा अदरवाइज इट विल बी एन OHT फॉर देम ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੰਨੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਧੀਰੇਸ਼ਵਰ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ सर मेरा क्वेश्चन है मैं क्या स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मेरे को सर मार्क्स लेने बहुत ज़रूरी है मैं कहा यस कहता मार्क्स के अलावा कोई और तरीका नहीं है मैं कहा ना सर फिर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो मार्क्स क्यों नहीं आते मैं कहा पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता आपको मैं कहा मार्क्स तो मेहनत तो गधा भी करता है गधा हमसे ज़्यादा मेहनत करता है वो बच्ची की एक जेन्युइन क्वेरी थी आप ही के एरिए का मुक्तसर साहब श्री मुक्तसर साहब का वो बच्चा है बहुत अच्छा उसका नाम भी मुझे कोई याद है वरदान लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल तो वेयरिंग रेड ड्रेस एंड ऑल राइट तो उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर किया
तो बच्चे की बड़ी क्वेरीज होती हैं। तो सर पेपर अटेम्प्ट करना 90% तो टीचर्स को भी नहीं आता, बुरा ना मानना, मेरे को भी नहीं आता था। मेरे को कब आया? जब मैंने पेपर चेक किए, जब वो बोर्ड की तरफ से वो आंसर शीट्स आई, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ कोई BDR नहीं है, अपने घर का राज नहीं है भी जिधर दिल करे नंबर दे दो। और मैंने बच्चों को बोला कि वहाँ यहाँ तो मुझे पता है कि ये बच्चा मेरा फेवरेट है, तो उसका पेपर आते ही ना एक अंदर से पॉजिटिविटी आती है, चल इसके नंबर तो लगा ही देते हैं। होता है ना, ये होता है। लेकिन वहाँ तो आप एक खाली नंबर हो, तो आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो? अपने राइटिंग से, अपनी डायग्राम से। और अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया है कि सेक्शन ए में अगर जो क्वेश्चन सेक्शन ए में अगर आपने सेक्शन बी का सही भी लिख दिया, you'll get 0 मार्क्स। ICSE में तो नहीं है, खैर CBSE में, CBSE में है, ICSE इज लिबरल, ठीक है, होली होली भी कर देंगे। सो डियर टीचर्स, हाउ टू अटेम्प्ट अ एग्जाम, हाउ टू अटेम्प्ट अ बोर्ड पेपर, that is an arcana, ARCANA, a special type of knowledge possessed by few people। कितने लोगों को ये फर्स्ट टाइम पता लग रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। देखो झूठ बोले नहीं, जरा माइक पकड़ के झूठ बोले, कौआ काटे। हॉस्पिटल में चलो मेरे साथ, डॉक्टर से पूछते कौवे काटे के केस आए हैं, झूठ बोले कुत्ता काटे, गाना चेंज करो। सो डियर टीचर्स, लॉजिक क्या है? इफेक्टिव टीचिंग में बच्चे की जो मेमोरी है ना, वो शॉर्ट लिव्ड है। खास तौर पे जब बच्चा स्कूल में आके पढ़ता है, वो गजनी का भाई बना होता है, उसको आपने रिवाइज करवाना है। और कई बच्चों को टेंशन होती है, एग्जाम फोबिया, और इफेक्टिव टीचिंग में आप कैसे उसको दूर करोगे? लेट मी टेल यू वन थिंग। सॉरी सर, मेरे को ना एक्चुअली आई एम फीलिंग गुड बिकॉज इतनी केमिस्ट्री और आ रही है अभी, चलो मैं बोलूँगा नहीं। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दिस दैट डियर टीचर्स, किसी भी शादी में चले जाओ, दाल मखनी मिलनी ही मिलनी है, पनीर मिलना ही मिलना है। किसी के घर जाओ, चाय पूछेगा ही पूछेगा। थोड़ा फुकरा होगा तो वो आपको ग्रीन टी रख देगा, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, डेविड रॉफ। अदरवाइज अपने पंजाबी बंदे तो कहते दुध ही पियो। और जे तुसी थोड़ा जिहा पंजाब दे विच लेट आवर च जा रहे हो, वो कहना हुण दुध का टाइम तो खत्म हो गया, होर शुरू हो गया, पी के जाओ। साडा पंजाब रंगला पंजाब ताई है, हरियाणा भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। सो लॉजिक की है? लॉजिक इज दिस के स्टैंडर्ड मेन्यू असीं स्किप नहीं कर सकते। इसी तरह ही क्वेश्चन पेपर जड़ा आना है ना फाइनल, बाय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 70% क्वेश्चन घुमा के वही होंदे ने। ये बच्चे नूं पता ही नहीं है। बच्चा कहता है मैं कल पेपर एक एक सम सॉल्व करूंगा, उसमें तुम समझाओ कि बेटा अब तूने सिर्फ मेन PYQ करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। देखो हम लोग कितना मर्जी अच्छा पढ़ाए, हम लोग कितना मर्जी, अगर रिजल्ट नहीं ना है, वी आर वर्थलेस। यू गेट माई पॉइंट सर? मतलब ऑलरेडी यू नो दिस। वो रिजल्ट कैसे लेके आए वो मैं बता रहा हूं। खज्जल उन्ना ही होना पैंदा सानू जिन्ना बच्चा खज्जल होंदा है, फिर रिजल्ट आंदा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आंदा डियर टीचर्स। मैं कई ऐसे टीचर्स देखे प्रिंसिपल मैम, स्कूल आवर्स तो बाद फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को घर बुला बुला के रात रात तक पढ़ा रहे हैं। क्यों? सो दैट देयर नेम शुड स्पार्क इन द सोसाइटी। असी नाम सम्मान लिए काम करते हैं, ये नाम सम्मान है, ये आप ही आ जाएगा सब, डोंट वरी अबाउट दिस। सो क्रिएट रिजल्ट्स, गिव योर बेस्ट। वो बच्चा कहता है कि मैं टीचर इज वर्किंग वेरी हार्ड, मैं की करना, मैं बच्चे को कहना मैं थोड़ा किसी भी वक्त किसी भी टाइम किसी भी वेले फोन करा, मैं सत श्री अकाल नमस्ते ये नहीं बुलानी, हेलो हाँ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, सर इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसिडर्ड, ओके थैंक यू बाय। बच्चे नाल मेरी कम्युनिकेशन इस तरह की सी कि मैं बच्चे को रिवाइज कराना, एक चैप्टर करवाया उसका टेस्ट ले लिया, फिर दूजा चैप्टर करवाया मैम उसका टेस्ट ले लिया, हुन 1-2 का कंबाइंड टेस्ट ले लिया, फिर चैप्टर 3
ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ, ਦੈਨ 1 2 3 ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 18 ਚੈਪਟਰ 18 ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਏ, 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚੈਪਟਰ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 18 1 to 18 ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ। ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਬਟ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, sir. ਮੈਂ ਟੇਕ ਇਟ। ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਬੋਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਸੋ hope the workshop is comfortable. Thank you. Vice Principal sir, Mr. Prince, I met him in the morning, and sir, so far how is the things going on? It's very nice session. I think all of you are getting many good techniques how to teach in a class, means how to change your behavior, किस तरह अपना behavior change करना। Everything depend upon your behavior। देखो knowledge सबको है, but how you are communicate to the student, thing is this। जैसे सर कह रहे थे ना कि how I can communicate, best thing I want to say, change your behavior। If you change your behavior, your communication become better। This is the only thing। Books सबको है, same books are there, same content is there, but thing is this, how we are managing the things in class। Actually, just we are going to have a break. Before break, you know, what happened, I was teaching in class in your school, Fateh Global. I'm a regular teacher of physics here, and Vice Principal sir has given a message to the peon कि विपिन सर ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪੀਐਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਭ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਤੇ ਐਮਡੀ ਸਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰ, ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਰਜਤ ਸਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਜਤ ਦੇ ਨਾ 2-3 ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਭਜਾਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਨੀਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਤ ਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਰਜਤ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੂਰੀ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਸਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਕਹਾਵਨ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਲੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਧਾਰ, ਡਗਮਗਾਏ तो गिर पड़े नीचल उतरे पार। मतलब कोऑर्डिनेटर कहलाना कठिन है, जिमें तलवार दी धार ते चलना। थोड़ा जिहा इम्बैलेंस होया, नीचे गिर गए। तो कोऑर्डिनेटर मैम बोलणगे पहला, क्योंकि प्रिंसीपल मैम, वाइस प्रिंसीपल सर एंड एमडी सर कोऑर्डिनेटर ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਰ, ਵਿਪਿਨ ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ अब मेरे दिमाग 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? मेरे दिमाग 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? रजत सर ने अग लगाई है। फिर उस तो बाद what happened is, I'm telling the reality, सर तुसी ਫਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਏ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। समझ आया? टीचर कदे भी अपना स्टाइल नहीं बदलता। ताली तो बजानी चाहिए है ना तेन।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਮ? ਮੈਥਸ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਥ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਓਨਲੀ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਥਿੰਗਸ ਬੈਟਰ। ਸੋ with the grace, honorable sir, to be continued. हाँ जी, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक, ठीक है जी। सो आफ्टर 15 minutes we will join again. Okay. Thank you sir, thank you sir, thank you very much.